Hi guys, I welcome you all to our channel We Learn, where learning is made fun and easy. आज हम phrases and idioms का part 3 लेकर आए हैं. इसमें we will discuss about the 10 smart phrases and idioms for daily use in just few minutes with easy way to learn. अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं. So, let's begin with the English phrases and idioms part 3. हमारा फर्स्ट फ्रेज है a feather in one's cap, which means an achievement that one takes pride in. मतलब हमने कुछ ऐसी चीज अचीव की है जिस पर हमें प्राउड हो तो हम यूज करेंगे a feather in one's cap. जैसे कि हमें साइड पिक्चर में दिख रहा है a cap जिसके ऊपर एक फेदर लगा हुआ है. आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, John earned a feather in his cap by getting first rank in competition. मतलब फर्स्ट रैंक आना कंपटीशन में उसकी अचीवमेंट थी. Next, wear and tear, which means damage that naturally and inevitably occurs as a result of normal aging. हमें पिक्चर में भी दिख रहा है कि एक टायर है जिस पर wear and tear हो चुका है due to friction. जब भी gradually with time कोई चीज naturally damage हो, for example tires, shoes, etc., then we can use their wear and tear. For example, tires of vehicles get wear and tear due to friction. Next, through thick and thin, which means through all circumstances. जैसे कि हमें साइड पिक्चर में दिख रहा है through thick and thin, which is a easy way to learn. मतलब चाहे कोई भी हालात हो तो वहाँ हम यूज करेंगे through thick and thin. Let's see the example. My parents have supported me through thick and thin. Means पेरेंट्स हमें हमेशा चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं. Next, red letter day, which means a day of significance or an important occasion. जो दिन आपके लिए बहुत important होता है लाइफ में तो उसके लिए हम यूज करेंगे red letter day. For example, the day on which we'll get offer letter for job will be a red letter day for us. Means वो दिन हमारे लिए बहुत खास होगा. तो जब भी हमने यूज करना हो कि कोई दिन हमारे लिए खास होगा तो तब हम यूज करेंगे red letter day. Next phrase is rags to riches, which means to go from being very poor to being very wealthy. जैसे कि हमें साइड पिक्चर में ही दिख रहा है from rag to riches. जब भी गरीब से अमीर बनना तब हम यूज करेंगे rags to riches. For example, his journey has been one of rags to riches. He started out as a street vendor and now is the owner of a big business. यानी कि उसने स्ट्रीट वेंडर होने से स्टार्ट किया था तो एंड अब वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है. Which means from rag to riches. Next, the more the merrier,
When occasion will be more joyful if more people are there. Means जब भी ज़्यादा लोगों के साथ कोई ओकेजन और enjoyable हो जाए, जैसे कि कोई पार्टी या टूर, तब हम यूज कर सकते हैं the more the merrier. Let's see the example. For example, John, do you mind if I bring a couple of friends to your party? Jenny, not at all, the more the merrier. यानी कि जॉन जेनी से पूछता है कि अगर मैं उसकी पार्टी में कुछ फ्रेंड्स ले आऊं तो उसको कोई दिक्कत तो नहीं होगी. तो जेनी ने कहा कि नॉट एट ऑल, द मोर द मैरियर. मीन्स ज्यादा जानों में ज्यादा इंजॉय होगा. Next, let bygones be bygones, which means to forgive someone for something done and to forget about it. In short, it means to forgive someone. इसलिए हमें पिक्चर में भी दिख रहा है sometimes you need to let things go. For example, we have had our fights over the year, but it's time we let bygones be bygones. Next, take the hat off, which means to praise, show respect, salute to someone or something. Which means कि हम किसी को respect pay करते हैं या उसकी praise करते हैं, then we will use take your hat off. For example, I have to take my hat off to her as she did a great job. Next, cry over the spilled milk, which means to cry about past events that cannot be undone. हिंदी में इसे कहते हैं अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत. Let's see the example. You have lost the game, but don't cry over spilled milk. And it is always useless to cry over the spilled milk. Next, to catch someone red-handed, which means to catch someone while they are doing something bad or illegal. मतलब किसी को रंगे हाथ पकड़ना, तब हम यूज करेंगे to catch someone red-handed. For example, the police caught the thief red-handed, यानी कि चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया गया. Hope you like our video. Please do like, share, and definitely subscribe to our channel. See you next time.